Now, shall be starting with the Claisen condensation. Sometimes this is also called as Claisen reaction. We have read about the condensation between the carbonyl compounds. Now, here what happens in Claisen condensation? Again, it is the base mediated reaction, but the substrate here being an ester, which contains a alpha hydrogen atom. This is the common alpha hydrogen has to be present. Base catalyzed reaction, but the substrate is an ester. When this condensation takes place between the identical, the same ester, right? That results in the symmetrical beta keto ester. The reaction takes place in presence of an alcohol and a base with alkoxide or alcohol. Fine, alkoxide and alcohol. So can be sodium alkoxide, lithium or potassium alkoxide. If this reaction takes place between two different esters, the condition has to be same, then it is called as crossed or mixed Claisen condensation. Here it is the same ester, R1 and R2 are the same in both. So the condensation product is simple a beta keto ester. Fine. If two different esters are taken, one is this ester. So remember always, otherwise, what will happen? If both the esters, they contain the alpha hydrogen atom. So naturally then, at least 4 different products, the mixture of 4 different products will be formed. So to avoid the production of different products during the reaction, when 2 different esters are taken, so always one ester is taken as such which does not contain the alpha hydrogen atom. ठीक है, अगर जब हम 2 different ester ले रहे हैं, अगर दोनों में alpha hydrogen है, तो a mixture of 4 products will be formed. Naturally either of this or of that इनॉल बन जाएगा. लेकिन अगर हमें ये अवॉइड करना है, देन एक एस्टर तो ऐसा लेना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरा एस्टर ऐसा लेना है, सॉरी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो. फाइन. तो एक एस्टर हमने लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और एक एस्टर हमने लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. Can be esters of aromatic acid, formic acid, oxalic acid. Now, first, we must have an idea about the reactivity of these esters towards nucleophile, because the ultimate mechanism will be the nucleophilic attack on the electrophilic carbon. ठीक है? तो जो भी हम एस्टर ले रहे हैं, उनका रिएक्टिविटी क्या है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल. सबसे ज्यादा एक्टिव जो एस्टर है वो है डाइइथाइल ऑक्सलेट. दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक. क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 carbonyl groups. So because of the presence of these 2 carbonyl groups flanked है, तो इसलिए दूसरा जो है इलेक्ट्रोफाइल जाएगा. अटैक अगर इस पर होगा तो ये मोर हो गया, इसका कंजुगेशन होगा. So diethyl oxalate ester is the most electrophilic ester. Then is the ethyl formate. Here hydrogen makes it electrophilic because no alpha hydrogen is present, and also because of the simple steric hindrance, this becomes electrophilic. Then is the diethyl carbonate, and the least electrophile, least electrophilic is the ethyl benzoate. If ये लिख लिया,
If you look how this electrophilicity is reduced in diethyl carbonate, simple, what happens? There is a conjugation between these. So because of this conjugation, the electrophilicity is reduced. This acquires the double bond character here again. So this electrophilicity is reduced. This is the normal ester, and this is the your diethyl ester. In diethyl ester, what happens? Simple, two inductive effect. They increase the electrophilicity. So you get more electrophilicity as compared to your normal. And now the last one was the ethyl benzoate. ठीक है, ये आपका सिंपल है एस्टर नॉर्मल में, ये आपकी आ रही है और इसमें ये आ रही कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है, रिड्यूस हो रही है। और जब हम नॉर्मल लेते हैं तो आपका ये आ जाता है। नाउ इसमें क्या हो रहा है, इथाइल बेंजोएट में लिया है आपने, तो क्योंकि एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है आपकी, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग, अगेन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज रिड्यूस्ड। ये हो गया है, आगे बढ़े? नो मैम। यस मैम। नो मैम। कहाँ पे लिखना है ये बताओ, इससे पहले वाला कि ये नीचे वाला? नीचे ही वाला, ये यस मैम। लिखो। हो गया मैम। हो गया। हाँ। नाउ अब क्या बताया था कि एक एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, अगर दो डिफरेंट ले रहे हैं तो नेचुरली जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही आपका सोलली इलेक्ट्रोफाइल होगा और यू कैन से दी एक्सेप्टर होगा, तभी आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। देन आपको बोला था कि जो बेस है वो एल्कोक्साइड एल्डी है और NaH है, ये भी याद रखना है क्योंकि क्या ये कंडीशन दी थी मैंने, कंडीशन थी ये अल्कोहल एंड एल्कोक्साइड लेना है, तो ये याद रखना है कि हम जो एल्कोक्साइड ले रहे हैं सेम अल्कोहल होना चाहिए, नहीं तो फिर इंटरचेंज होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब अगर इथाइल अल्कोहल लिया है तो इथाइल एल्कोक्साइड होगा, मिथाइल लिया तो मिथाइल एल्कोक्साइड होगा, ठीक है, नहीं तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे। जनरली क्या होता है, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं क्लेसन में, एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जबकि आपका रिएक्शन जो है एस्टर इनोलेट कीटोन या एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है, तब आपको बीटा कीटो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। और अगर उल्टा रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है इनोलेट एस्टर से, तो 1,3 डाइकीटोन बनेगा। नाउ वी आर मूविंग टू मैकेनिज्म, तब आएगा क्लियर कि कैसे होगा। Like in other reactions, it is a base catalyzed reaction, so the very first step will be the abstraction of the proton or deprotonation of the alpha hydrogen, right? जो एस्टर का है अल्फा हाइड्रोजन, वो abstraction of proton होगा by alkoxide base. So this deprotonation will result in the formation of an ester enolate. Now, like in aldol condensation, this ester enolate attacks on the electrophilic carbon of the carbonyl group, right? एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड जो भी हम लोगों ने ले रखा है वहां पे आ गया आपका, डिपेंडिंग अपॉन एक्स कैन बी एनी। नाउ दिस attack will give rise to a tetrahedral intermediate, ठीक है, सिंपल आपका ये अटैक हुआ है and this results in the formation of a tetrahedral intermediate. This tetrahedral intermediate
is then cleaved or decomposed by eliminating the leaving group in this manner. Can be, आपने अगर एल्कोक्साइड लिया तो ये एल्कोक्साइड होगा, हैलाइड लिया तो हैलाइड होगा, whatever you have taken accordingly आपका ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा. अब क्या हुआ, ये रिमूव हुआ, जैसे ये आपका गया, अब ये कार्बन adjacent to carbonyl groups है. Because of the presence of carbonyl group on the adjacent position, this remaining hydrogen becomes very acidic. Fine. More acidic as compared to your precursor ester. And you have the basic condition. So again, this hydrogen is being abstracted by the alkoxide or by the base, so as to give, this is your alkoxide minus alcohol. Now you have a very stable anion, resonance stabilized anion. And during the course of the workup, this anion immediately gives you the beta keto ester. And this beta keto ester now is less reactive than the enolate with which you have started. So this is how the beta keto ester will. कहाँ तक लिख लिया है अब इसको? ऊपर का लिख लिया है? Yes, ma'am. अच्छा, ये No, ma'am. हो गया? No, ma'am. नो, लिखो. हो गया? Yes, ma'am. अरे तो बोलो, आगे बढ़ जाए हम लोग. नाउ थर्ड स्टेप, ये यहां तक तो लिख लिया, अब ये लिखो. हो गया? हो गया, ma'am. हो गया. Now we are moving to cross collision between two different esters. Already told you diethyl oxalate is more electrophilic. So one ester with alpha hydrogen, this is without alpha hydrogen, in presence of sodium ethoxide in alcohol, and in 83% yield
of this ester is formed. Now, how it is going to be formed? Simple, what we have read. Simple ester. Enolate banega low concentration. So you are having this enolate generation, and this enolate then reacts with the more electrophilic diethyl oxalate, very fast reaction. And you have anion, which is then leaving group is expelled out. You are having an intermediate with an acidic hydrogen, more acidic hydrogen. So this is converted immediately to a stable anion, and usual workup gives you the tricarbonyl compound. So this is very good method for the synthesis of a tricarbonyl compound. Actually, this is the beauty of this reaction. You are getting a tricarbonyl compound in good yield, 83% yield. Okay, tricarbonyl compound is formed in 83% yield. लिखो, ये लिख लिया कि नहीं? अभी लिखो, जल्दी से लिखो. हो गया मैम. हो गया? Now, another was the Claisen condensation between ketone and esters. So here, मैंने बोला था ना कि कुछ कीटोन न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, इनोलेट बनाते हैं, और एस्टर जो होता है, they act as an electrophile. So cyclooctanol enolizes easily and is then condensed with your ester, which is less electrophilic in presence of sodium hydride, and very good yield of ketoester is formed just in 91% yield. That is very good. And if instead this unsymmetrical ketone is taken, then what happens? Just see what happens in unsymmetrical ketone. If you have taken an unsymmetrical ketone, right? This is your unsymmetrical ketone. On one hand, you have this, another side is this, your enolate. When this is reacted, condensation, you will get this type of enolate, which is more stable as compared to this, which cannot form. This is the enolate, final enolate. So this intermediate cannot form the stable enolate, not at all. Whereas this can form a very stable enolate. So by taking unsymmetrical ketone, even a single product is obtained without use of any specific enol equivalent. Because the reaction, why? Because the reaction takes place at less substituted site. This is the less substituted site. So reaction takes place at less substituted site, or you can say which has more
hydrogen atoms, and this cannot go further. So the only product formed from the unsymmetrical ketone is this. देख लिया? आगे बढ़े? हो गया होगा. Yes, ma'am. Now then, if an alkene is present, a double bond is present at the remote site, means far distance from the reactive site, the carbonyl site, then it does not affect, not at all, on the Claisen reaction, and this double bond remains intact during the course of the reaction. Like here, the unsymmetrical ketone. Now you can see one side is the methyl, whereas these are the other side, which has the alkyl chain with the double bond. When the reaction is carried out, 85% yield of the keto ester is formed with intact double bond. So if any unsaturation is present remote from the active site, that does not affect the Claisen reaction. Remember, if both enolates can form, so the less substituted, this is what I told you, dicarbonyl enolate is preferred as it contains fewer groups to lie in the hindered plane of tetra substituted enolate double bond. क्या आया आपका? देखिए अब क्या हो रहा है, ये सारे एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे. फाइन. तो दैट्स व्हाई ये आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड यहां पर आ गया. ठीक है? तो ऑलवेज लेस सब्स्टिट्यूटेड डाई कार्बोनिल इज प्रिफर्ड टू मोर सब्स्टिट्यूटेड डाई कार्बोनिल. ये आपका हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसीलिए ये प्रिफरेबली बनाता है इंटरमीडिएट. अगर दोनों इनोलेट्स हैं, देन लेस सब्स्टिट्यूटेड डाई कार्बोनिल इज प्रिफर्ड टू मोर सब्स्टिट्यूटेड डाई कार्बोनिल. सिंपल आपको यहाँ पर टेट्राइडल इंटरमीडिएट से हमने दिखा. राइट? लिख लिया? No, ma'am. लिखो लिखो लिखो. ये ऊपर का हो गया, यहाँ पे लिख लिया था. ठीक है, यहाँ से लिखो. चलो आगे बढ़ रहे हैं. हो गया होगा. A drug acifran. This is the structure of the acifran. This is used to reduce the amount of bad lipoprotein in the blood to prevent heart disease. This drug has its action in removing bad lipoprotein in the blood, so heart blockage does not take place. क्या होता है, जो इसकी एक सिंथेसिस जब करी जाती है, तो एक की स्टेप आती है जहां पर की क्लेजन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है. वो की स्टेप ये है, ये तो कीटोन है आपका, एरोमेटिक कीटोन.
This reaction, this methyl ketone is reacted with the diethyl oxalate in presence of a base. You get the ketoester hydrolyze, and this undergoes cyclization so as to give the acifran. What happens? The hydroxyl group of the ketone, it does not interfere during the reaction. What happens? First molecule of base जो है वो पहले रिमूव करता है हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का, और फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल आता है वो आपका रिमूव करता है नीचे से एस्टर टू फॉर्म द इनोलेट आयन. देन इसके बाद जो है कंडेंसेशन बहुत हाई हो जाता है क्योंकि डाइथाइल ऑक्सलेट बीइंग वेरी highly electrophile, so react fast, and simple acid treatment will